This is me, Ramin. Welcome to episode 3 of Happy Hour podcast. I hope that you all are doing well. Today, I have a musician with me. He's a wonderful singer, and I went through all his songs, I went through his projects, and trust me, maybe a fan. So, I'm very excited about this one. I'm talking about Sayyid Raamiz Rizvi. Hello, hope you're well. I am well. I am well. How are you, Ramin? I'm good. Thank you for joining me. No problem at all. No problem at all. Happy to be here. Glad. So, as we start, tell us a little about yourself. Okay, but firstly, tell me a few sentences about yourself because I don't know much. What do you do other than, like, of course, you're hosting a podcast, but, what else do you do? Tell me a Interesting. bit. So basically, अभी I'm in O3. Okay. अभी अभी मैंने O2 के CIs दिए हैं, so waiting for my result now. So Best of luck. a little stressed about that, but anyway, other than that, I am a writer as well. I write. Um, and I've like posted a few of my writings on my Instagram. उसके अलावा मैंने कुछ books भी compile की हैं और I've worked as a co-author as well. So that's basically what I do, to be exact. और अभी recently ये venture शुरू किया है, so I hope कि ये सब अच्छा हो. And yeah, Okay. Nice. Very nice. Very nice. Um, you said that you put some stuff on Instagram that you wrote. Is yeah, it is it poetry of any kind? yeah, it's poetry. It is. Acha, okay. Do send that over. Let's see if we can integrate that into a song. Sure, sure, why not? Yeah. I hope. Okay. All right. What's your first question? Bring it. So, like, first, just tell us a little about yourself, like your background and all of that, and then we'll move on. Okay. Okay. Let me first tell you about my background as a person and then musician पे भी फिर आ जाएंगे. Right. So I did my O levels from FPS in Karachi. I did my A levels from Nixer College, also in Karachi. I was never like a very high achiever. I wasn't a low achiever either. मैं कोई बीच में ही रहता था, like average, sometimes below, sometimes above in terms of academics. Um, but yeah, I think that initially तो मुझे ये लगा कि okay, you know what, I want to be an engineer क्योंकि I liked cars and I felt like being an engineer मैं गाड़ियाँ ठीक करूँगा and गाड़ियाँ बनाऊँगा. But then with time I realized कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता. I like interacting with people way too much, and hence I moved into business. So I went to IBA, did my undergrad from there. उसके बाद कोई मैंने 2.5-3 साल काम किया in Karachi, Bahawalpur and Dubai. And uske baad phir I started my MBA, for which I went to Lahore. So it was an MBA at LUMS for 2 years, and I just got done. और अब job start हो जाएगी. So that's me as that's my history as a person. In terms of me as a person, I think I'm very family oriented. Um, absolute mama's boy. Absolute mama's boy. I love sweet food, लेकिन I realize कि वो मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है because family के अंदर there are those genetics where we tend to gain weight, so I really need to be careful about that. इसलिए ज्यादा मीठा खाया नहीं जा सकता, even though बहुत ज्यादा शौक है. Favorite food I feel is biryani. कितना typical answer है, right, for a Karachite, biryani as a typical food. Yeah, but But और इसको भी बिरयानी बहुत पसंद है. लाहौर और कराची की बिरयानी के बीच में जो वो थोड़ा सा वर्सेस वाला सीन चल रहा होता है. बट एनीवे,
So yeah, so I like all of that. I have two younger brothers. One is going to inshallah become a doctor. He's extremely smart. He's the smart one in the house. Usse chota wala is in that age where he's playing Fortnite all the time. Um, which interestingly would I think be your age as well. You're pretty young, but like based on the qualifications you have, you've like compiled books and stuff. So congratulations on that. Yeah, you've done a lot with your life. So yeah, so that's me as a person. I love football. Football से मेरी sanity थोड़ी सी attached है. I've been playing since I was, I don't know, 15, 16. O level से ही खेल रहा हूँ. And if I don't play, then I become a completely different person. Now for music. So how I started music was कि my family, so family के obviously वो दो sides होते हैं, right? So there's the mom side and there's the father's side. The father side of my family, they sing very well, they play instruments, और वो उनको उस चीज का जो है वो बहुत ज्यादा है कि गाना है, सुनना है, बजाना है, वो चीज करनी है. मम साइड ऑफ द फैमिली को बिल्कुल गाना नहीं आता. they're they're terrible at it, but they love it. उनको शौक उतना ही है, जितना बुरा वो गाते हैं उतना ही शौक है उनको गाने का, तो इसलिए वो सब जो है बस एक साथ बैठते हैं एंड देन वी ऑल जस्ट सिंगिंग, और वो फिर वही महफिलें भी लग जाती हैं, और one thing after the other. So it all started when I think I was 5 and everyone realized कि शायद ये गा सकता है, तो उन्होंने उस चीज को एंजॉय करना शुरू कर दिया. एंड देन दे वुड मेक मी स्टैंड ऑन टॉप ऑफ अ टेबल wherever we were ना, तो वो टेबल के ऊपर मुझे खड़ा करते थे, बोलते गाना गाओ. और मैं बोलता था मैं कौन सा गाना गाऊं, क्या गाऊं. उस टाइम पे एक दो ही गाने मुझे आते थे, तो वो मैं गा लेता था और तालियां वालियां बजती थी उसके लिए. और मेरी स्टेज फ्राइट जो है वो इतनी ज्यादा थी कि आई यूज टू फॉल सिक. मुझे बुखार हो जाता था. हाँ, मुझे बुखार हो जाता था और मैं रोता था. लेकिन उन्होंने मुझे टाइम के साथ थोड़ा सा बेगैरत कर दिया इस मामले में, कि नाउ आई थिंक आई एम एट दैट पॉइंट वेयर मुझे बोला जाए तो मैं गा लेता हूँ. So that's where it all started. Went to O level, still had a lot of stage fright. कभी भी स्टेज पे खड़े होके मैंने गाना वाना नहीं गाया. um, फिर A levels में आया. A levels was a completely different time. O levels was a weird time because I was also bullied at the time. So वो एक बहुत different सा power dynamic था, and I wasn't really confident in myself. A levels में things changed, and there were a few events जिन पे I went and sang, and that basically started this whole thing कि okay, you know what, गाना है. And then उसके बाद सबसे ज़्यादा revolutionary thing was when I came to Lahore. वहाँ पर I made a lot of friends from the industry, and जिन्होंने मुझे बार बार बोला कि गाओ गाओ गाओ. There's too many names. I think I'll name them later on because of course shout out देना होता है अपने boys को. But so वहां पर जाके it really happened where they went like, okay, you know what, Ramis, खुदा का वास्ता है लिखना शुरू कर दो. And I did not have a single artistic bone in my body. मैंने मतलब मुझे अगर आप एक स्टिक फिगर भी बनाने को बोल दो तो वो भी शायद मैं कोई लाइन टेढ़ी बना दूंगा उसके अंदर. आई एम वेरी बैड एट आर्ट. लेकिन फिर यही हुआ कि आई स्टार्टेड राइटिंग. कोई जनरली आपको इस तरह की एपिफनीज जो है ना वो रात के 3 बजे के आसपास आती हैं. एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग एंड आई रियलाइज्ड कि लिखते हुए some inspiration of my nani and दादी वाली उर्दू came into it. कि ऐसे वर्ड्स मेरे दिमाग में आ रहे थे कि आई वाज लाइक कि यार इसका मैं मतलब चेक कर लेता हूँ. तो मैं गूगल साथ खोल के बैठा हुआ था कि लफ्ज आ रहे हैं दिमाग में, इसका मतलब क्या है नहीं पता. तो दैट्स व्हाट आई डिड, एंड देन आई रोट, एंड देन आई वाज लाइक अच्छा इंटरेस्टिंग, ये तो मैं लिख सकता हूँ. एंड देन आई eventually recorded. I went on stage, and I sang it, and people liked it, and that's where it all came to life as a musician. वरना घर और बाथरूम तक ही महदूद था. Pretty interesting. और वो जो एक होता है ना, when you go on stage and you perform like for the first time, that feeling is just something else, right? Yes, 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 yes. Yeah, so one of the main reasons why I started actually was कि
I went to one of Hassan's concerts. So Hassan Rahim, right? So I went to one of his concerts, and वहाँ पर जो है वो I saw him singing and performing on stage, and he's an amazing performer, right? He's amazing on stage. तो मैंने उसको परफॉर्म करते हुए देखा, and then I saw that the crowd was singing every lyric, right? उनको पूरा रटा हुआ था गाना, and मैं सिर्फ साइड पे खड़ा हुआ था, and I was like, यार, you know what? I want to create something जिसको कोई एक बंदा भी अगर याद कर लेना, तो I'll be like, you know what? This is my baby, and I'm sharing it with the world. So that's how it all came about, यार. उसके बाद फिर ताहाजी को मैंने देखा on stage, and he was dancing, और मैं बोला कि यार, there's so much to it and people absolutely love this stuff. And वहां पे मुझे like वो goosebumps मुझे आते थे जब भी ये लोग स्टेज पे जाते थे. मानू स्टेज पे जाता था, ये सारे स्टेज पे जाते थे. I used to have goosebumps, and then I was like, you know what, करना है. And then the first time I went on stage, um, there were people didn't really know my song क्योंकि पहली बार मैं स्टेज पे गया था with जाने जाना. um, it wasn't released at the time, so I had to like talk them through it. I was like, you know what, गाने में एक part आएगा जहाँ पे आप लोगों ने सबने मिलके जाने जाना बोलना है, right? And initially it feels a little cringy to do something like that, but then you see that the people in the crowd are nodding and they're smiling, and when you start singing they go like, अच्छा सही है, ये ठीक गा रहा है, ये अच्छा गा रहा है, let's let's vibe with him. And फिर यही हुआ कि like वो I used to move the mic towards them, and they would say जाने जाना, and I used to have those goosebumps. And then with time people started knowing and remembering the song, and then I used to go on stage, और फिर वो एक completely different एक aura होता था जहाँ पे मुझे like, again, shout out to LGS 1A1, क्योंकि वहां पर जब मैं गया था तो I couldn't hear my own voice. I was on stage, I couldn't hear my own voice, and that was the most surreal experience that I had in life. और मेरे साथ जो मेरा मैनेजर मुफासा वगैरह ये सारे भी गए थे, and they were like, रामिज ये क्या हो रहा है, like what's going on. और मैं स्टेज से उतरा हूँ, and I'm like, यार मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है. And it was just amazing. So every time I'm on stage, it is an absolute blessing. The first time I was on stage was the start of something beautiful, start of something very alien to me as a person, and I am incredibly thankful for it, and I hope to do it again. अभी winters के अंदर start हो जाएंगे inshallah concerts. Yeah. Inshallah. So, coming back a little to, you know, now you're a musician, uh, you working as well. तो Mhm. अब एक OA level student के पास जाते हैं, Mhm. and I think OA levels वाला जो time होता है ना, बहुत stressful time होता है as a student, or probably it's the worst time. Yeah. और I mean बस एक अजीब सा time होता है. So, and like मुझे लगता है पाकिस्तान में it is even more difficult because for many reasons. So how was your OA level journey? My OA level journey was incredibly hectic, जैसे हर किसी की होती है. वो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठते हैं और वो बोलते हैं कि वेलकम टू द CIE, उस टाइम पे CIE थे, एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश काउंसिल. तो आप जो है वो बोलते हैं कि भाईजान ये क़यामत है और कुछ भी नहीं होने लगा और टेस्ट नहीं दिया जा सकता, बस खत्म है. बट निकल जाता है यार, टाइम निकल जाता है. बट आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत खुशी वाला मोमेंट वो था जब मैं अपने A2 का आखिरी पेपर देने गया था, बिकॉज आई रियलाइज कि इसके बाद मैंने ये चीज नहीं सुनी. ठीक है, क्योंकि वो एक अजीब किस्म का PTSD अटैच्ड होता है उसके साथ. एंड वो बस when you leave it in the past, then you leave it in the past. But one thing that I would say is कि यार don't worry about it too much. Do worry about it, of course. Education is a base, वो बहुत जरूरी है. It's incredibly important. Um, but at the same time, don't make it your entire identity. वहां से आप अपनी value derive कर सकते हैं. You can say कि okay, I want to do well because that's how I am as a competitive and ambitious person.
but you are yourself first, and then those things second. So abhi obviously aap logo ke results aane wale honge, I think 16th of August, is that the date? Yeah. Yeah, yeah, yeah. I have some cousins, so मुझे थोड़ा idea होता है. And best of luck. Just don't worry about it. One step in front of the next, in front of the one before. Anyway, just just do that, and you'll get to your destination. Don't worry about it. You're doing well in life. To anyone listening to this, you're doing fine. You're doing well. Don't worry too much about what may happen. Think about the present. जो हो गया है वो हो गया है. Move forward. Try to be a better individual, and if you grow as a person, then your academics will always follow. Just by the way, the more disciplined you are, the better of a person you are. आपके academics खुद ही fix हो जाते हैं. Your family life gets fixed. A lot of things will fall into place. So just take care of yourself, and do not go into those anxiety and panic attacks. And please do not take any sort of medication that can keep you up to the point कि आप पढ़ सकें. Do not do that. That's bad. Seems like you've done that. Sadly. यार, so there is a concentration के लिए ना एक चीज आती है. I do not want to say more because लोग फिर जाके खरीदना शुरू कर देंगे. Do not do that. वो आपको जो है ना एक अजीब किस्म के स्टेट में डाल देती है, because I stayed up for like 48 hours on a stretch. और एग्जाम दे के मैं वापस आके लेटा था, तो I couldn't sleep. My body was extremely tired, but because of the medicine, um, जनरली वो मेडिसिन ADHD पेशेंट्स को रेकमेंड की जाती है. बट खैर वो मतलब it was just not a good thing to do. So balance your sleep out, schedule your day, लिख लो कि कब क्या पढ़ना है, but don't push it to the last moment where you have to go for drastic measures that are suboptimal for your health. Right. So, coming to your music, Mm-hmm. uh, how do you describe your style of music? Good question. um I would say that it is an emulsification, or an amalgamation of everything that I have consumed over time, right? So I have consumed music from Strings, Arijit, um, Vital Signs, Linkin Park, AC/DC, all the way to Post Malone, Drake, and all of these artists. तो वो इतना width इतनी ज़्यादा हो जाती है कि you need to find that point where आपकी अपनी identity as an artist comes forward. So while I try to keep it a little more personal to myself, so if you listen to my two singles that have come out so far, one is Khat. Khat is an artistic sort of song जिसके अंदर तबला भी है. It's a slower kind of, like a late night, just gazing at the stars kind of melody. एक वो है. On the other hand, there is Jane Jana, which is a more upbeat, pseudo dancey type of beat. So I think मेरी music जो है falls somewhere in between that, which is something that you are gonna start seeing pretty soon. Right. Talking about your projects, any new projects that are coming up? Yes. Uh, so there will be a song coming out with, should I say this already? Chalo, I'll say it, with Amna Riaz. So it's my song, and Amna is collaborating with me on it. And perhaps that song is going to come out in the next 2 to 3 weeks, I would say. Plan ye tha कि because I don't want to release any music in Muharram. So plan ये था कि after Muharram. But let's see where that goes. वो timeline हो सकता है थोड़ी सी आगे push हो जाए. Good luck for your projects. Thank Uh, you. so one thing that's very important to talk about
Well, yeah, that what do you think is the state of the music industry today, and where do you think that it will go in the future? And also, what are the improvements that you feel के होनी चाहिए? Okay, before I get started on this answer, you asked me about projects, and मैंने आपको एक बताया था. There's another one coming out with Mohammed Ali. Mohammed Ali is a fantastic musician, by the way. He's a great vocalist. उसके साथ भी एक गाना आ रहा है. It's going to be his song, and I'll be basically featured on it. So hoping for the best on that as well. Now coming to this question. So this question being the state of the industry right now, the future of Yeah, the industry, and what can the industry improve on? Is yeah, that something that you're saying? Acha. Okay, so the industry is generally, so industry is made out of two primary components, right? एक वो जो music supply कर रहे हैं और एक वो जो music demand कर रहे हैं, right? And जब आप improvements की बात करते हैं, so they need to come from both ends, right? Um, in terms of the supply of music, industry का future मुझे क्या नजर आ रहा है? I see a very bright future actually. So I think initially Coke Studios set the stage for a lot of new musicians to come in, for people to continue practicing music and basically bring it to the to the spotlight के हाँ सही है हो रहा है. वहाँ से things took up. Initially things were made very commercially, but with time it changed in a way that लोग जो है वो different चीज़ों के साथ उन्होंने experiment करना शुरू किया है, different sorts of music. You see, people, COVID वाला time was a time when a lot of people experimented with music. Hassan Rahim came up during that time as well. And if I see that trajectory, then I see okay, things are getting better and better and better, and there will be a consumer base for any type of music that you put out. तो उस तरह से supply के end से I think a lot of new people are coming in who are very talented, who write well, who sing well, who produce well, who are visionaries about how this industry can go forward. So वो तो that's very bright. That is very bright. Shariar Ali Malik Shari is another artist who जिसका style is a bit different, but at the same time the music is phenomenal. His songs are Psycho and Backseat, or wo he talks about certain mental health issues through his music. And I think ये सारी चीजें होती हैं जो allow करती हैं कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करे, ऐसी चीजों के बारे में बात करना शुरू करे that a lot of people experience. That is not just love and how love was lost, and वो जनरल जो नैरेटिव्स होते हैं अराउंड आर्ट. आई नो कि करंटली मैंने अपने दोनों गाने इसी चीज के अराउंड बनाए हुए हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के साथ एक्सपेरिमेंटेशन आ जाती है उसके अंदर. So yeah, so वो है. In terms of the demand, I think लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके accept करना शुरू किया. People are accepting new types of music. They're trying. Spotify के आने से ये काफी फायदा हुआ because Spotify recommends you different types of music, so people keep consuming different artists all around. And that is great क्योंकि आप फिर आपकी audience जो है वो थोड़ी broaden हो जाती है. Where the industry can do better, I think कि एक point आता है जहाँ पे एक सीलिंग आना शुरू हो जाती है कि ओके इससे ऊपर इंडस्ट्री शायद ना जा सके, राइट? सो उस पॉइंट को ब्रीच करने के लिए वन थिंग दैट नीड्स टू हैपन इज दैट ऑल द आर्टिस्ट्स नीड टू सपोर्ट ईच अदर. जो नया आर्टिस्ट आ रहा है उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रीच बॉर्डर्स. बाहर के लोगों से के साथ आप काम करें. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई थिंक इंडस्ट्री के फ्यूचर का ओनर्स जो है वो लिसनर से ज़्यादा आर्टिस्ट के ऊपर फॉल करता है, बिकॉज एन आर्टिस्ट और समवन इन मीडिया इज at times responsible for the way that they frame the future of a society, right? If strings came along and log एक certain तरह से affect हुए, strings was guiding society in a certain way. Nuri was guiding society in a certain way. तो उसके बारे में भी you need to be very
कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्सिबल कि मैं क्या इम्पैक्ट लेके आ रहा हूँ सोसाइटी के ऊपर, व्हाट सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट इज माई म्यूजिक हैविंग. So I think that's an onus that falls on the artist. And I think with maturity and with time, all of us will try to make sure that the art that you listen to, the art that people listen to generally, is art that is worthy of being listened to and is art that is progressionary in nature rather than, recessionary in nature. Right. Yeah. And yeah, I think another thing is कि with time लोगों like एक time होता था जो in fact I'll ask you ये भी कि आपकी target audience है क्या? Target audience है क्या? यार weirdly enough ना, so हर artist का ना एक अंदर से एक वॉइस ऑफ रीजन होता है जो उसको बोलता है कि देखो, यू हैव certain things जो तुमने अभी तक फिगर आउट शायद नहीं की हुई. सो आई थिंक दैट टारगेट ऑडियंस इज समथिंग दैट आई स्टिल हैवंट बीन एबल टू figure out exactly. I am at that stage where I go like, okay, you know what, I want to make music, और मैं ऑडियंस के बारे में सोच के म्यूजिक नहीं बनाना चाहता. I want to make music based on what I like. I will make the music, and then I will see who is listening to me, who is not listening to me, and how I can improve myself so that a larger audience listens to me. But in terms of कि अच्छा target audience क्या है, I think that's a very marketing term. And जब आपकी when your music turns into marketing, then it becomes a business and not a passion. And I feel that is disservice to the craft in itself. तो इसलिए I don't really narrow in कि अच्छा मैं किसको सुनवाना चाह रहा हूँ ये गाना, मैं ये गाना किन लोगों के लिए लिख रहा हूँ. That's not a part of the consideration. Consideration ये है कि गाना लिख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, what can I do better in the song, and put it out there, and then if people like it, then people like it. So far people have liked it, and I'm very thankful for that. And I enjoy when people get back to me or bolte hain ki yaar, this is an amazing song, thank you so much, is tarah se. It's very nice. Lekin I can't narrow myself down to the point where I go like, I will make it a certain way for a certain person. It's personal, it's mine. So we were talking about your target audience. वो मैंने इसलिए पूछा था because I feel कि अब पाकिस्तान में म्यूजिक I don't know much, but I think चीजें बहुत चेंज हो गई हैं. पहले भी even audience wise भी people they're accepting new styles of music. अब पहले हम ना एक ही theme पर stuck थे, Yep. that was love and all of that. But now people are experimenting new styles of music और वो सब, और I think new genres भी. और लोग अब सुन रहे हैं. पहले रैप इतना ज्यादा पाकिस्तान में नहीं था, but now वो बहुत फ्लरिश किया एकदम से. So that's why I was a little interested in knowing about that. um yes, I agree कि as a target audience आपको ये आप सोच सकते हैं कि हाँ, अगर मैं इस तरह की म्यूजिक निकाल रहा हूँ तो who do I expect to listen to it, ये आप कर सकते हो, right? So rap music, like you mentioned, at a certain time it was nowhere, right? वो underground ही होता था, right? काफी पहले आई थिंक मेरे ओ लेवल्स के टाइम पे यंगस्टर्स निकाला था बरगरे कराची एंड मैला मजनू एंड ये सारे गाने, राइट? सो काफी लोगों ने अभी सुने हुए भी नहीं होंगे, बट लाइक एट दैट टाइम फॉर अस दैट वाज लाइक, ओ अच्छा ये रैप है और ये उर्दू में रैप है, क्या चल रहा है यहाँ पे. उससे पहले भी ऑब्वियसली देयर वाज बोहेमिया एंड ऑल ऑफ दोस, लेकिन वो एक डिफरेंट स्टेज पे चल रहे थे. With time, yes, people are accepting music more, and I think वो horizon open रखना is very important for people, क्योंकि music is a way to look into the soul of an artist or a person, right? तो अगर मैं बोलूं कि अच्छा रामीन मुझे अभी नहीं जानती, लेकिन अगर मैं रामीन को अपने 10 फेवरेट गाने बता दूं, तो
तो उसके बाद रामीन जब मुझसे बात कर रही होगी ना, तो रामीन बोलेगी कि ओ अच्छा सही है, मुझे समझ आ रहा है ये बंदा, कि ये बंदा किस तरह का है। एंड it's all based on the lyrics, it's based on the type of music that you listen to। आपकी आदतों का आइडिया हो जाता है, आपकी जो है वो, अगर यू नो लाइक इफ यू हैव दैट रोमांटिक बोन इन यू, उसका आइडिया हो जाता है। यू नो इफ यू आर कल्चरली इंक्लाइंड, उसका आइडिया हो जाता है। देयर इज सो मच जो म्यूजिक के थ्रू आता है, एंड इट्स अ प्राइमरी मीडियम फॉर अस टू इंटरेक्ट विद पीपल, राइट। सो एक एक गैप इंडस्ट्री के अंदर ये भी है कि पीपल के, हम अभी तक एज आर्टिस्ट, हम we're not able to sell the brand, we're selling the product। कि अच्छा सही है, गाना अच्छा बना दिया, यू नो लोगों को अच्छा लगा, गाना अच्छा लगा, but do people know who Raamiz Rizvi is? Do people know where he comes from? Do people know what he believes in? Do people listen to me because of the song, or do people listen to the song because of me? ये चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं, राइट। एंड वो विथ टाइम मेच्योरिटी इस तरह की आती है आपको, कि यू गो लाइक ओके, यू नो व्हाट, इफ आई एम मेकिंग म्यूजिक, आई वांट कि लोग मुझे जाने, कि यू नो हु एम आई, नॉट इन अ सेल्फ ऑब्सेस्ड सॉर्ट ऑफ वे। क्योंकि मतलब आप ये नहीं बोलते कि मैं इतना अमेजिंग हूँ कि लोग मुझे जाने, प्लीज यू नो गेट टू नो मी। नो, यू गो लाइक मैं जब म्यूजिक लिखता हूँ तो आई एम बीइंग वल्नरेबल, दिस इज एन आर्टिस्टिक साइड। आर्टिस्टिक साइड के साथ एक चीज जो सॉरी, हर आर्टिस्ट के अंदर कॉमन होती है, एटलीस्ट जनरली व्हेन इट्स टेकन एज आर्ट एंड नॉट समथिंग टू मेक मनी ऑफ ऑफ, वो चीज कॉमन ये होती है कि वो जब लिखता है, और जब वो बजाता है, और जब वो गाता है, और जब वो एक मूवी बनाता है, या वो कोई नज्म लिखता है, व्हेन रामीन पुट्स पेन टू पेपर, then that is the most authentic Ramin that there will be. Yeah. And that is the entire essence of the industry. That is the essence of being an artist. कि आप अपनी vulnerability सामने रख रहे हो, और आप बोल रहे हो कि you know what, मैं भी इंसान हूँ यार। हाँ सही है, मैंने गाना सीख लिया है, मुझे आता है, आपको 10 ऐसी चीजें आती हैं जो मुझे नहीं आती। एंड ऑफ द डे आई एम अ ह्यूमन, एंड ऑल आई एम डूइंग इज मैं बयान कर रहा हूँ, और आपको अगर सुनना है आप जरूर सुने, हम दोनों को मजा आएगा इस चीज में, right? Just take me as a human. I'm having a human experience while I'm writing, and I'm sharing that with the world. And I hope that the world likes it. That's it. And that is a gap that the industry still has. क्योंकि अभी भी लोग जो है वो लिख इस तरह से रहे हैं कि यार मुझे किस चीज के ऊपर स्ट्रीम्स ज्यादा मिल जाएंगे, मुझे किस चीज से पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। That's fine, that's all well and fine, you know, people want to make money off of it, obviously वो एक प्रोफेशन को करना चाहते हैं, तो उसके साथ पैसे आने चाहिए, that's fine, that's only you know natural कि आप वो एक obsession अपने साथ रखें, that's great। लेकिन at the same time, don't take it away from where you started in the first place। Every musician started with raw passion कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले इससे, मैंने सिर्फ लिखना है, और मैंने गाना है, और मैंने बजाना है, and that is it, it's just me and my art। And as long as you stay true to it, there will always be people who will be willing to accept your art। There will be people who will go like okay, अगर ये 10 चीजें बोलता है तो उसके अंदर से I agree with 3 things, but I believe that this person is who he says he is। And that authenticity is something that will really pave your way through the industry, rather than you just being something that people go like अच्छा सही है, ये एक टॉप पे बैठा हुआ है, एंड मुझे नहीं पता कि ये कौन है, ये क्या करता है, ये कहाँ से आता है, क्या चक्कर है। बट that's how things go। Hassan Rahim has done that pretty well, you know। Hassan is a doctor, um, you know, गिलगित से आया हुआ है, right? He is, you know, initially आप हसन को देखते हो तो you used to go like कि यार ये पड़ोस में रह सकता है इस तरह का बंदा मेरे, you know, nothing that you see is like oh, this guy has, you know, like every persona to be a celebrity। No, he is just a guy making his art, and you're enjoying that art। वो एक बंदा है, and that was the beauty of things। And that's somewhere that I feel the industry is still struggling
to get into the mind of the listener us tarah se, to be a part of their, to be in their hearts rather than just in their ears. I think that's important. I agree, like 100%. So, talking about again the industry, do you think कि जो already present artists हैं वो जो young artists हैं या जो नया talent आ रहा है उनको accommodate कर रहे हैं, support कर रहे हैं या नहीं? करते हैं यार, करते हैं, absolutely. I think everyone tries their best to give advice to कि एक सर्टन एवेन्यूज खोलने के लिए कोशिश जरूर रहती है कि इस तरह की कोई चीज की जाए. एंड that's one of the best things about the industry right now is कि since industry अभी भी काफी टर्म्स में it's still young, तो वो यंग इंडस्ट्री के अंदर भी जो लोग थोड़ा टॉप पे पहुंचे हुए हैं ना, they're I mean mostly I would say that they're down to earth, they're ready to have conversations, they're ready to guide people, they're ready to give them a platform. Now if you're talking about a platform इस तरह से कि यार मैं आपके साथ गाना कर लेता हूँ ताकि आपके listeners बढ़ जाएं और आपका जो है वो प्रोफाइल बढ़ जाए, that's something completely different. वो that's not what I'm talking about. मतलब वो एक बहुत ही short term चीज होती है कि that um, anyone, Taha ji, yeah, Hassan and Rushan as experienced musicians go like, yeah, say, I will collab with this new guy. ठीक है, that's one thing, but it's more about the persona that you have. It's more about कि आप किस तरह से उन लोगों से बात करते हैं, किस तरह से उनको गाइड करते हैं, किस तरह से आपने इंडस्ट्री का एटमोसफेयर बनाया हुआ है कि लोग उसके अंदर ऑपरेट कर सकें एंड दैट दे कैन रियली ब्रिंग देयर पैशन आउट एंड at the same time manage things according to how things should be managed rather than how they have to manage things. So I think पुराने लोग जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म सेट करते हैं ताकि नए लोग आ सकें, एंड सेटिंग दैट प्लेटफॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड सो फार आई फील दैट पीपल आर डूइंग दैट very well. They're doing that very well. They're setting the platform. So now I think we've had enough serious talk. Let's switch a little. So चल ये something भी कर लें. we're not. Moving on towards our last round, which your fans or whatever you want to call them, uh, Okay. they would love it. So basically, I haven't introduced, in fact, ये मैं आज introduce करूँगी अपना round. So it's like Yeah. a short rapid fire round. इसमें whoever the guest is, हम उनके लिए we ask their fans कि वो अपने questions भेजें, and whatever questions they send हम उसमें से shortlist करते हैं, and then we will ask, I mean, the first That one. sounds scary. Uh, काफी scary sound कर रहा है, just by the. don't worry, we have filtered through those questions, so don't worry. इतना कुछ scary नहीं है. वो क्वेश्चन स्केरी थे जो आए थे, लेकिन ये जो मैं पूछूंगी वो स्केरी नहीं है. चलो जो scary वाले हैं वो भी मुझे भेज दें. Right, so सबसे पहले someone has asked you, what do you do other than music? I think I mentioned that I am a sales and marketing professional, and I have had a few years of experience in the market as well. So all in all, अगर मैं उसको अगर मैं थोड़ा सा और wide कर दूं, so one thing I do is that I really enjoy having conversations regarding philosophy and liberal arts sort of subjects. मुझे काफी interesting लगता है because I've never really been in a classroom environment where any of that has been discussed. तो इसलिए I just you know try my best to read up on those sorts of things. So that's something that I'm very interested in. Football, as I mentioned, is something that I'm incredibly interested in. For those who might ask, I am a Manchester United fan. हाँ, थोड़ा सा बुरा टाइम चला है पहले, but it's gonna be okay. It's gonna be okay. Other than that, what do I do? Okay, so professionally बात हो गई, फुटबॉल की बात हो गई, लिबरल आर्ट्स के अराउंड बात हो गई.
I think that's basically it. I think that's basically it. Yeah. Right. Who's your favorite footballer, Wesley? I'm just asking. Acha, हाँ, this is rapid fire, right? Yeah. Okay, so I need to be quick. सही है. Favorite बताइए. footballer. Uh, favorite footballer of all time, I would say it's Cristiano Ronaldo because of Manchester United. Right. Then, ever been approached by the media industry? Yes. I won't tell you who or which network approached me, but yes, and this, goes back into I think 2014, 15, जब मैंने अपना university start की थी at IBA, and yes, I was called up for it कि अच्छे सही है आ जाएं, let's ड्रामे शामे करते हैं साथ and stuff. But since I was studying at the time, I did and I prioritized that. So I was like, नहीं मुझे इसमें नहीं जाना. And plus, I don't really like being in front of camera anyway. तो इसलिए I am camera shy and I don't really enjoy it as much. तो इसलिए अगर एक artistic चीज करनी है तो music it is. Right. Favorite song in Pakistan right now? Oh shoot. Okay, that's tough. I think अगर मैं इस time की बात करूं very specifically तो it would be For You by Manu. Okay. Go to place in Karachi. Xander's. Karachi or Lahore? Oh, that's tough. Oh, that is so tough because Karachi ke log, I have all of my people in Karachi, so इसलिए I absolutely love the people here. लेकिन अगर we're only talking about the शहर, right? हम Yeah. लोगों की बात नहीं कर रहे अभी. Just a Okay, city. लोगों की बात नहीं. अगर सिर्फ शहर की बात करना है तो लाहौर. अगर सिर्फ शहर की बात करना है तो लाहौर every day of the week. I love Lahore. If you were a song, what would you be and why? I were a song. Yeah. Which song would I be and why? Okay, that's that is tough. That is very, very tough. Do you want me to Uh, skip this one? yeah, let's come back to this one. ये इसके बारे में मैं सोचता हूँ, and then let's come back to this Okay, sure. So, what's the most daring thing that you've done? Ever done? one. The most daring thing that I have ever done. The most daring thing that I have ever done would be. Okay, so I had पता नहीं ये daring है या stupid है. I think this is more stupid than daring. Um, definitely more stupid than daring. So I'm gonna answer the question. What's the stupidest thing you've ever done? Okay. So I back in my O levels, I had this. I had a crush on this girl. And वो काफी time से ना I had a very like lengthy crush on her. And मैं शुरू से बंदा ऐसा हूँ कि मुझे signals ना नहीं मिलते, मुझे समझ नहीं आती चीजें. तो मैं बहुत एक तरह से I'm very when it comes to that sort of stuff. तो हुआ ये कि उसकी एंड उस टाइम पे मेरे गले के काफी ना प्रॉब्लम्स होते रहते थे लाइक व्हेनेवर आई यूज्ड टू हैव लाइक सॉफ्ट ड्रिंक स्पेशली लाइक पेप्सी एंड कोक. तो उस टाइम पे जो है वो मेरा गला जो है वो खराब हो जाता था. अब नहीं होता, पता नहीं उस टाइम पे काफी ज्यादा हो जाता था. सो हुआ ये कि लाइक आई हैड बीन टॉकिंग टू हर फॉर अ व्हाइल, ऐसे ही ऑन एंड ऑफ जस्ट एज फ्रेंड्स जो है ना वो बात कर रहे होते थे. एंड माय ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स यूज्ड टू गो लाइक हे शी we think she likes you as well. I was like, अच्छा सही है, ठीक है, this is it's nice, लेकिन I don't believe you guys क्योंकि मतलब मुझे तो सिग्नल्स लेने ही नहीं आते थे. So what happened was कि उसकी बर्थडे थी एंड वो ना अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ she came over and gave me like a can of Pepsi and she's like, hey, here's my birthday treat. Right now, अगर कोई भी तमीज का दिमाग वाला बंदा होता ना तो वो समझता कि ओके यस दिस इज लाइक हर वे ऑफ सेइंग हे आई लाइक यू, लेट्स टॉक. मैंने ये बोला कि आई एम सॉरी, आई एम एलर्जिक टू पेप्सी, मेरा गला खराब हो जाता है. एंड देन आई जस्ट टर्न्ड अराउंड एंड लेफ्ट. सो हाँ,
तो ये yes, so that is the stupidest thing that I've ever done. Yes. आई थिंक मुझे अगले क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया बिकॉज उसमें मैंने यही पूछना था व्हाट्स द डमेस्ट थिंग दैट यू एवर डन, सो मुझे मेरा आंसर मिल गया। डमेस्ट थिंग का तो आपको मिल गया है बिल्कुल आंसर। डेयरिंग थिंग का मैं जरा सोच के आपको बताता हूँ। डेयरिंग थिंग मैंने क्या किया है सबसे ज्यादा। ओके, एंड देन यू प्रीटी टॉल, सो हाइट के क्या फायदे होते हैं? ओ खैर, यार ये एक सो दिस इज ये एक मिथ है कि हाइट के फायदे होते हैं। आई थिंक फायदों से ज्यादा जो है वो हाइट के नुकसानात होते हैं। फॉर सम रीजन पीपल लाइक अदर पीपल हु आर टॉल, लेकिन मुझे उसके पीछे रैशनल इतनी समझ नहीं आती। पहले तो ये है कि जब से आप पैदा होते हैं वो आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि घर के पंखे ये साफ करेगा, लाइटें ये साफ करेगा। ठीक है, कोई भी ऊपर ऊंचा कैबिनेट है तो वहां से सामान उतारना है तो वो आपने उतारना है। हम्म। बल्ब फिक्स भी चेंज भी करना हो ना बल्ब, तो वो आपके ही खाते के अंदर इस तरह का काम आता है। एंड उसके ऊपर से हाँ एक फायदा ये है कि क्योंकि लोगों को पता नहीं टॉल होने का कोई सीन होता है कि यू नो लाइक टॉल पीपल आर ग्रेट, तो इसलिए इट्स नाइस टू मेक फन ऑफ योर शॉर्ट फ्रेंड्स। इट्स डेफिनेटली नाइस। माइलो इस्माइल खान, मोहम्मद इस्माइल खान, दिस वंस फॉर यू। you're short and I love you, but you're short। और ये मैं पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ। प्लीज डोंट गिव न्यू आइडियाज टू माय फ्रेंड्स एज वेल बिकॉज मेरी हाइट भी कोई खास नहीं है। So yes, last question. Who is Okay. dream collab in Pakistan among young musicians? Who is my dream collab? Can I name top three? Sure. Okay. I think थोड़े usual suspects ही होंगे ये, लेकिन it is what it is। So there is इस मानू एंड अब मैं हसन रहीम और ताहा जी के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फिर रहा हूँ। आई थिंक ताहा जी। आई थिंक ही इज समवन दैट आई वुड रियली एंजॉय वर्किंग विद, तो इसलिए आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हेनेवर दैट हैपेंस। Right. Good luck. Hopefully you'll do great. And दो now, सवाल ठीक है थे, दो yeah, सवाल रह गए थे। और ये दो रहते हैं if you would like to। कौन से थे? अच्छा, सो वन वाज द मोस्ट डेयरिंग थिंग दैट आई हैव एवर डन, राइट? Yeah, the most sharing thing. और एक और था वो मैं देखती हूँ। ओके। Yeah, if you were a song, what would you be and why? एक ये था। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। if I were a song, I would probably be Kabira। Why? Because I am very deeply rooted into culture, और जब और मुझे बाहर भी रहने में बहुत मजा आता है। एंड आई लाइक ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, बट आई लव बीइंग बैक इन पाकिस्तान, इन कराची, यू नो लाहौर, विद माय फैमिली। एंड जब कबीरा के अंदर वो आता है टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, so it's all about you coming back home and how home doesn't home feels different, and home feels like home whenever you come back। So Kabira would be that song। what's the most daring thing I have ever done? Um, यार I think it would be the first time I got on stage। वो थोड़ा सा I think एक तरह से थोड़ा सा क्लीशे आंसर हो सकता है ये, but I think that's the most daring thing I ever did, क्योंकि knowing myself, knowing कि मैं थोड़ा सा I do have stage fright और मुझे डर लग रहा था काफी ज्यादा, but I did do it and then it turned out well, so you know like that leap of faith does pay off। But that's the most daring thing I ever did, क्योंकि उस टाइम पे everything was telling me कि रामिज
मत करो, you will bomb this, तुम बकवास हो गए, and no one will want to listen to you. But people did, so I'm glad. Right. So अब now it's time for something जिसका मैं सबसे ज्यादा वेट करी थी, और वो ये है कि I want you to sing something for us. Okay, okay. So luckily I do have my guitar right here, so I will pick this up. And God, जगह नहीं है जहाँ मैं बैठा हूँ ज़्यादा. Okay. Can you hear this? Yeah, I can. Okay. So this will be. So while I want to sing like a new song, लेकिन जब वो आएगा तभी आप लोग सुन लोगे. I'll just sing जाने जाना right now. Yeah. Done. ताबीरों में तेरी हंसी ना रही, चाह खुद की तो है पर खुद ही ना रही, किस्मत की लकीर अब मेरी ना रही, उलझा बैठा तेरी यादों में तभी जाने जाना. Been 1,000 days and I can't help miss you today, Jane Jana. She's 10,000 miles away and I refuse to forget. बाहर छोड़ो खिजा है जान लो, अब बात करने आई थी खाली मकान को, आगे सोचो हमने क्या चाहा और क्या पाया, मरते दम तक ना फिर हमें कभी चैन आया, क्यों ऐसे तुम रुकी, पूछूं जब मिलोगी कभी, बेजुबां बेजवाब दिल की बातें सुनता भी रो में तेरी जरूरत नहीं, चाह खुद की है तेरी रही ना कभी, उल्फत के तराने में लिखता नहीं वो दुनिया क्या जिसपे तुम ना रही, जाने जाना. I'm moving on with nothing but a smile on my face, जाने जाना. You're the past now, I deserve so much better than this. That's it. That's जाने जाना. Wow. I love it. Thank you. Thank you. I try. And in fact, I'll be listening to this like now for a while. Thank you. I really hope you like it. Thank you so much for joining me. I had a lovely time, and I mean, this was very fun. It's been an absolute pleasure.